Good morning. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So let's start the day with positive things. Flexibility and adaptability. These are two things that help us to move in right direction. Life teaches us so many lessons, and our life is full of learning. As we move forward, some new events comes. Some events are totally unexpected, and these events normally give us a hard teaching. Similar is the situation at present. We are passing through a very critical and difficult phase of life of humans. The first wave came last year, and with lot of effort we all were able to tide over it, and by the time year ended, most of the people were satisfied that they are able to survive this wave. Examinations also happened. The people, those who are striving for exams, they could appear in examinations, and result also came in early 2021. Some of them have already got the appointments, got their first salary, and some others are awaiting their document verification and joinings. And then the sudden turn of events have shaken everyone. The April this year happens to be most difficult period in life of all of us. Many of us are suffering due to this disease. Their relatives may be suffering due to this disease. Some of our friends, near ones, are also faced fatalities also. It's a very difficult period. When I read comment of our subscriber, some of them are now caught by this ailment, and they are still keeping their willpower strong, struggling hard, and we wish for their speedy recovery. They have to learn a hard lesson. The hard lesson is flexibility. The hard lesson is adaptability. So as things goes in different direction, we have to change our direction. We have to learn new techniques. We have to learn new methodologies to take care of this challenge. So my advice to each one of you is be courageous, keep your willpower strong, have patience, try to fight out the situation, remain healthy, remain at home, try to focus on study, rearrange your study plan according to available sources. Now, this is a additional time that we are getting. As per original schedule, some of you might have appeared in SSC exam or other state level exams, or maybe even SBI Junior Associate if notification would have come. But now, as things are delayed, I don't foresee any exam happening in the month of June. One of our subscriber commented, "Sir, I have to appear in a West Bengal exam in May. I am worried." My own sense says this exam may also be postponed like any other examination.
So we need not unduly worried about the coming exams. Rather, we should focus on strengthening our knowledge. We should focus on weak areas, learn more and more things during this period, and try to keep ourselves healthy and good mental health. At present, keeping ourselves in good physical as well as mental health is important, because many people may suffer and they may go in depression. They may be worried about their livelihood. They may be worried about so many things. So keep calm. This phase will go over. This phase will also blow over. But we have to remain cool and calm, rearrange our things, become flexible. We have to take the challenge and adapt according to circumstances. So I am posting daily schedule how you should prepare. These videos are available in the video channel. So if you are not able to figure out, just search the videos. So you will find the videos uploaded today. And one of the video is daily schedule. This is posted in the morning. Follow that schedule, you will succeed. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दो ऐसे शब्द हैं जिनकी आज नितांत आवश्यकता है. यदि हम देखें 2020 का वर्ष बहुत चैलेंजिंग आया था. शुरू में ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और काफ़ी लोग निराश हो गए थे. इस चैनल ने हमेशा आपके अंदर आशा का संचार बनाए रखा और निरंतर आपको ये बताते रहे कि एग्ज़ाम होंगे, सिलेक्शंस भी होंगी, जॉब्स भी लगेंगी, और अंततः वही हुआ. जिन लोगों ने कहना माना, उस रास्ते पे चले, वो कामयाब हुए. जनवरी फरवरी के महीने तक आते आते रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए और काफ़ी लोगों की सिलेक्शन हो गई, उनकी ज्वाइनिंग्स भी हो गई, कुछ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, और कुछ की अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग पेंडिंग है. साथ ही साथ आशाबंदी की एग्ज़ाम्स काफ़ी होंगे. लोगों ने पढ़ाई शुरू की, मेहनत शुरू की, और अचानक अप्रैल 21 के आते आते स्थितियां पलट गई. बहुत विकट स्थितियां आ गई. ऐसी स्थितियां आ गई जहां काफ़ी लोग सेकेंड वेव की चपेट में आ गए. इसमें हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं. उससे काफ़ी लोगों में चिंता का भाव आ गया. हमारी पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा और एक अजीब सा माहौल हमारे चारों तरफ बनने लगा है. ऐसे में हमें क्या करना है? परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां परिवर्तनशील है, व्यक्ति को उसके अनुसार बदलना है. और इसीलिए जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, एडॉप्टेबल है, परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित करता है, वो सदैव कामयाब होता है. तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम सोच रहे थे कि अप्रैल और जून के बीच एग्ज़ाम होंगे और नहीं हो रहे, परिस्थितियां बदल गई, तो हमें भी अपने पढ़ाई को उसके अनुसार रीएडजस्ट करना है. हमें ये एडिशनल टाइम मिला है, इसके अंदर उन विषयों के ऊपर ध्यान दें जहां हम कमज़ोर हैं, उनको सुदृढ़ बनाएं. इस चैनल पर डेली शेड्यूल वीडियो डाला जा रहा है, उसको फॉलो करें, उससे पढ़ें और अपना मन एकाग्र करके पढ़ाई में ध्यान लगाएं. सेहत पर ध्यान दें. सबसे पहली चीज़ है अपनी फिज़िकल हेल्थ पे काम करना. दूसरी चीज़ है अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना. किसी भी तरह के बुरे विचार ना आने दें
निराशा अपने आसपास ना आने दें, हमेशा आशावान रहें। अगर जरा सी भी निराशा आपके आसपास आए, मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए, उससे आपका ध्यान पलटेगा, आप में फिर आशा का संचार होगा। इस तरीके से आप चलिए। गॉड ब्लेस यू और